Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mamuni Coding Technology. तो आज आम ए भिडियो हेडर टैग विषय रे जानिबा और HTML वेब पेज रे हेडर टैग केमिति व्यवहार करा जाए ता जानिबा। तो चलंतु आमे हमर ए भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो एठाने आमे HTML स्ट्रक्चर लिखिबा। और एबे हमें टाइटल भितर हेडर लिखिबा। हेडर लिखिबा और एबे हमें थरे हेडर टैग को ओपन करिबा। और थरे हमें एबे nav टैग को ओपन करिबा। एठारे हमें कंटेंट टैग को ओपन एवं क्लोज करिबा और फुटर टैग ओपन एवं क्लोज करिबा। तब हम एठो लिखि देबा हेड टैग भितर हेडर एठरे कैपिटल H तथा लिखि देबा नेविगेशन एठा लिखि देबा कंटेंट और एठा लिखि देबा फुटर। तब हम आपको भी सेव करते एठरे किछि भी असला नहीं। तो एबे हम एठारे CSS अप्लाई करिबा। तो चलन एबे हम एठारे CSS अप्लाई करिबा। तो एठा लिखिबा style is equal to inverted comma border column 2 pixel solid gray semicolon height column 50 pixel semicolon inverted comma close bracket में मध्य close। तब हम एठारे सेमती टैग भी CSS अप्लाई करिबा। style is equal to inverted comma border column 3 pixel solid red semicolon column height column 50 pixel inverted comma close bracket मध्य close।
तो हमें कंटेंट लिखा तो एठारे हमें गोटे पैराग्राफ बनेबा हम गोटे पैराग्राफ बनैले तो एबे हम ए ब्रैकेट को काटी दबा तो एठारे हमें आबे पी टैग लगाइबा पी टैग लगेगा अब हम फुटर को आसीबा एठा लिखिबा स्टाइल इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा बॉर्डर कॉलम थ्री पिक्सल solid gray semicolon height column 50 pixel semicolon तो एबे हमें एहाकू फाइल के लेके सेव करिबा फाइल के लेके सेव करूची और एठारे में रिफ्रेश करूची तो देखो एठारे हमर फुटर टैग एवं सीएसएस फुटर टैग रे केमि सीएसएस अप्लाई करले ताहा जानले तो आपण मानक जदि वीडियो भल लागि थाए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिवे थैंक्स फॉर